So yesterday we started with the reports, and then we have seen these two examples. I mean, how to construct a tabular report. And then we constructed these two use cases actually we have solved. So let me go to the reports first. Yes, so I created a folder, Align HR report folder, custom folder. And then yesterday we have created these two reports, right? Now let's again start with the same tabular report because we have two more use cases left. So let's solve this first and then we'll start with the summary. So the third use case is actually we should configure a tabular report on the same account object, and it should represent all customers who are associated with the few cases. Rather, I mean, not the customer. It should represent all the account records, those who are associated with the few cases, those who are associated with cases. That means, see, I have inside the account, if I go to the account object, and inside the account, if I just open this all accounts, now I can see that altogether there are 17 different account records are there inside the account object. Now, let me open few of them. Now, if I randomly pick up some of them, probably Merck Incorporation and this Sfdcstart and United Oil and the Gas and the University of Arizona. So I'm just randomly, clicking, making it click just to show you something. So now one by one, let me check with this. So Merck Incorporation, this one is an account record, and you see this account doesn't have any cases associated to it, right? So the Merck Incorporation doesn't have any cases, although it have some contacts and the opportunities that are associated to this record, but it doesn't have any cases. Now, what the use case actually shows, we should display, on the report, we should first of all construct a tabular report, on which object? Account object. Now, in such a way that, it should represent only those account record, those who are associated with cases. I mean, the account record that have associated cases to it. Now, Merck is definitely not among one of them, because Merck doesn't have any cases associated. Now, the second is sample accounts for entitlement. It again doesn't have any case. Sfdcstart have, it doesn't again have any cases. United Oil and Gas UK, it have a case record that is associated to it, So I get one of them is actually having a case record, okay. Now let me check out with some others like University of Arizona. It is also having some case record. Actually, one case record is associated to this account, University of Arizona. And this Dixon PLC is also doesn't have any cases associated with them. Burlington Textile Corporation is having two cases. So now I came to know about this, and our conclusion is that few of the account records is having cases, few of them doesn't have any case. Okay. So now my use case is what? Among all these 17 account records, among all these 17 account record, I should construct a report in such a way that it should represent only those accounts who is having some cases associated with them, right? So this is the use case. And how to do that? Let's construct the new report. Let's construct a new report on which, again, the account object. So select the account from here and click on this create button. Now, let's first of all select what are the columns that we want to be, visible on the report. I mean, what the columns, what we want to be have on this report. So I want to have account name, then rating, and then, the active status, the phone, the fax, and the website, probably. I've also displayed the billing city and the billing country. And apart from this, type is already there, rating is already. Let me also display the industry. Okay.
So these many are the column names. These many are the fields that I have selected to be displayed as columns on my report. So from here, you need to select all accounts, and there should be no custom range. Should be all accounts and all time accounts. Now, if I initially run this report, I can see all the 17 records, all the 17 records. That means all of the account record. Now is the time to apply the filter. Let's once again go to the customize section and let's apply some filter. Guys, am I perfectly audible with you? Because actually I'm using my mobile network. Uh, so Yes, sir. no disturbance at all, right? Fine. Thank you so much for acknowledgement. So you understand this? I mean, I created this sample tabular report. Now let me apply filter so that we can achieve the use case. What the use case is saying to me that I should only display those account record that is having some of the use cases, some of the cases associated to them, right? This is what my use case is. Yeah. So for this, actually, we need to apply cross filter. You remember the cross object field update action? We inside the workflows and the process builder, we have learned about this. What exactly is the cross object field update action? Just a second. So if you remember the cross object field update action, what was that? We apply the workflows or the process builder on another object, and it's going to update the field of another object. So whenever the word cross comes to you, whether it is a cross object field update, whether it is cross filter. So always remember, what we are inside the Salesforce, this word cross actually means we are talking about more than one object. That is what the word cross actually means. So here is the same perspective. We need to solve the same. What the requirement is actually requirement is we need to see those accounts record. I mean, these all are the account record, and altogether there are 17 different account records is there. But then we specifically need to find out those account records that are associated to some of the cases. And we have seen, few of them is having cases, few of them doesn't having the cases. Like Merck doesn't have any case to be associated with it. Sample test also doesn't have. I think some of them, like United Oil, is having the cases, and probably University of Arizona. These are the few account record those is having some few cases associated to them. So I specifically want those account record to be displayed on this report. Presently, it is displaying me what? It is displaying me the complete account records. So how to achieve this? We actually need to go with the cross filters. In that case, whenever we want to, have a field, whenever we want to work on two different objects, so we should work on the cross, something like the cross. So this word cross is actually used to indicate that here we are going to include one more object. So for this, we need to have a cross filter and see how does it, we create the cross filter. So what we want those accounts with or without, we want the accounts or something else. We want the accounts, those accounts with this, with what? With some assets, activities, cases, with some contact, with some contracts, with some opportunities, everything, whatever the account is associated to whom, whatever then, these many are the number of objects, entitlements, opportunities, order, account, and object is actually related with all of them. So among this list, what we want? We want the account, those who are having some of the cases. So I'm selecting this cases over. Now it's going to give me only those account record that are associated to what? That are associated to the cases. If you want, for example, in the use case, if I mention that accounts that are having some contacts, then you should select the contacts. If I ask you that, the account, you need to show me those account, those who are having some opportunities, then you need to select this opportunity. Presently, as per the use case, I need to display only those accounts that is having some cases. And so I'm selecting cases from here, right? Let me press this OK, so that the formula is going to be applied. So here is this all, 9 records altogether. Out of 17, there are 9 account record. Let me run that. So there are 9 account record, those who are having some cases.
So if you want to check, you can just click over here and make them open on the separate tab. Let's just cross verify them. Let's just cross verify them whether actually there is having some cases or not. So I have opened this Genie point. So I have opened this Genie point. Yeah, from here. So this Genie point account record, you see it is having some cases, two number of the cases. Just to cross verify, United Oil and Gas, it is also having a case. Edge Communication is also having, three cases that are associated with this account record. Burlington Textile Corporation of America is having two cases. University of Arizona is also having a case. So yes, now it is proved that out of that 17, these are the 9 records, and these 9 records are those account record who's having some cases associated, right? So this is the way to apply cross filters. This is the way to apply the cross filters. Now let's move ahead. Okay, let me save this. So it's like, tabular use case number 3. And we store it in the align. Save it. So let's take the second use case, the fourth use case and the last use case. We need to configure a tabular report on what account object again, once again, and it should represent only 5 accounts which are having industry as the banking. So first of all, I'll do one thing, actually, let me first go to the account object and let me make some modifications so that I can, let me open few of the record. And let's see what is the industries over there. So for this Burlington Textile Corporation of the America, this industries April. Let me make some changes and make it to be the banking, so that we can solve this. I'm just doing because I want you to show something. That is why I'm making this industry to be the banking. Edge Communication is actually electronics. I'm making it to be the banking. Save it. So now the industry becomes banking. And this is what express logistics. So it's just transportation. I'm making it to be the banking. Save it. And Genie Point is actually a biotechnological company. I'm making it as the banking. Let me save it. Today my energy is a little bit down, so please bear with. Hospitality, banking. Save it. And then the last is Merck Incorporation is insurance. Let me change it to be the banking. Save it. Pyramid Construction is construction company. I'm making it to be banking. So now, whether we have this banking over, so let me show you. Here I can show you that. Let me select the industry column. So altogether there are 17 records. You see some of them are having banking, some of them are having some other. So what is the use case now? Now let's discuss what we want. We want to construct a tabular report on which object? Account object. We want to construct a tabular report on which object? Account object. That first of all, it should represent those accounts whose industry is banking. And out of all these accounts, it could be 6, it could be 7, it could be 10, it could be 70. Out of all those records, those who are industries banking, now it should display only 5 record, top 5 record. This is what. So here we are going to apply 2 different types of filters. So that is what I'm going to show. So let's construct a new report. That is use case number 4, 5, whatever. So let me select the account to be the object and let's create a new report. What I want, first of all, select the columns, what you want to display on the report. So, and all these, I also want to display the industry.
ठीक है. Let me go with only this, or probably I can add something like phone I could add, and active status I could add. So yes, now let me select all accounts, and let me select all time accounts. Okay. So I have the all 17 records over here. Now, if I run this report, I could see that altogether there are 17 records. Some of them is having industry as banking, and some of them is having apart from the banking also. So first of all, let me apply a filter so that I could, out of all these records, out of all these 17, let me first apply a field filter so that I can what? I can select only those accounts whose industry is banking. So from here, let me select industry. Industry should be equals to what? Industry should be equals to banking. This is insert the selection, make it okay. So now you have 8 records, you have 8 records. If I run this report now, I can see that altogether there are 8 records, 8 account records whose industry is what? Banking. Now out of this 8 record, I want to have first 5 records only, right? So here the third type of formula, we have understood about the field filter, we understood about the cross filter, and now let's understand the row limit filter. So what we want? We want this row limit, row limit to be the 5. Now this limit should be based on what? Account name, it should be based on industry, it should be based on annual revenue, whatever you want. Okay. So I want it just to be based on account name in the ascending order. In the ascending or descending, you can sort it. So, okay. Now see, only 5 account records are going to be displayed starting from A. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, like this. So first 5 records, because I selected it from the account's name, based on account name, I have performed this sorting. Based on some other column also, you can perform the sorting, So these, out of that 8 records, of the account whose industry we are banking, now we are displaying only 5 records, and this is how you apply the row limit filters. Okay. So with this, actually, we completed the tabular report. Every example of the tabular report is being completed. Let me now save this report. Run this report. Let's save it. So it's actually use case number 4, I think. Yeah, it's use case number 4. Let's store it to the align HR and save it. चलो, तो ये आपका tabular report यहाँ पे खत्म होता है. Let me move ahead with the second type of the report, and that is summary report. Give me a second. A second. Okay. Summary. What is a summary report, first of all? So summary is actually a report which allows you to, first of all, combine the data. Matlab we can group the data. That means one or more fields we can group it from a single object. Actually, we can group them, and then we can summarize the report based on few of the fields. That is what actually there are 2 different types of summary report. Let me tell you that. Summary and the matrix, both of them are summary report. Summary to summary है ही. अभी आगे चल के ना after joint report we are going to understand with the matrix report. Matrix is going to be the last report. So both of them, matrix report as well as your summary, both of them is a kind of summary report. दोनों ही summary report है. फर्क सिर्फ इतना है कि summary report में here what you can do, here you can summarize the report based on rows only. अभी सिर्फ सुनो आप, आगे चल के अभी जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा. कोई भी सिर्फ सुन लो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ. तो समरी और मैट्रिक्स, सबसे पहली बात, दोनों ही समरी रिपोर्ट है. दोनों ही समरी रिपोर्ट के फॉर्म है. ठीक है, नाम अलग अलग है. हालांकि समरी रिपोर्ट भी एक समरी रिपोर्ट ही है जैसे कि नाम बता रहा है, और मैट्रिक्स रिपोर्ट भी एक तरह का समरी रिपोर्ट ही होता है. ठीक है. क्या होगा आप देखेंगे अभी. ये समरी रिपोर्ट में वी based on rows we are going to summarize.
और मैट्रिक्स में रोज और कॉलम दो चीजें होती हैं, दोनों के बेसिस पे आप समराइज करते हैं। तो अभी आप देखने वालों कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ड्रॉप जोन होता है। ड्रॉप जोन क्या होता है वो भी पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर एक ही ड्रॉप जोन होता है और वो होता है रोज के लिए। तो बेस्ड ऑन रोज आप जो है किसी भी रिपोर्ट को समराइज कर सकते हो। और मैट्रिक्स में जब जाओगे ना तो दो ड्रॉप जोन मिलेंगे आपको। एक होता है रोज के लिए, एक होता है कॉलम्स के लिए। ठीक है, एक तो ये बात। चलो अभी ये सब जो भी हमने बोला अब शायद आपको समझ में आया ना हो कोई तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा है कि अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इस पे तो ये चीजें आ जाती हैं समझ में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी नहीं है आपको, ये बतानी है आपको। तो एक पहले दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली और फिर हम आते हैं इस पे। देखो मैं इसमें से कोई भी एक रिपोर्ट ओपन करूँ, इफ आई ओपन दिस टैबुलर, कोई भी एक रिपोर्ट में ओपन करता हूँ। ठीक है, सो अब देखो यहाँ कहीं पर भी आपको ना चैट कंपोनेंट का बटन नहीं, मतलब आप इस एरिया को ऑब्जर्व करो। ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये ब्लैंक है, यहाँ कोई बटन नहीं। ठीक है, यहाँ कोई भी बटन नहीं है ऐड चार्ट कंपोनेंट ऐसा कुछ तो भी। तो इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि ऑन द टैबुलर रिपोर्ट, ऑन द टैबुलर रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट्स हैं सारी जो अब तक बनाई है हमने सारी टैबुलर रिपोर्ट। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना भी है कि ऑन द टैबुलर रिपोर्ट यू कैन नॉट क्रिएट chat component, you cannot create the dashboard components. ठीक है, on any tabular report you cannot create the dashboard components. Actually the dashboard components or the chat components can be created on summary. So now they ask you this in the interview also. Show that. Yeah, what are the different types of report and on which report the dashboard components are available. ठीक है, on which report we can create the dashboard components. Yes, on which report we can create the dashboard components. So this is one of the interview question. तो आप कौन सी रिपोर्ट पे डैशबोर्ड कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो? एक्चुअली इसका आंसर है समरी रिपोर्ट। वी ऑलवेज क्रिएट अ डैशबोर्ड कंपोनेंट ऑन समरी रिपोर्ट, बट बिकॉज मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ समरी रिपोर्ट, जैसे कि मैंने अभी डिस्कशन में लाया कि मैट्रिक्स भी एक तरह का समरी रिपोर्ट ही होता है। क्या होता है कि थोड़ा सा एडवांस होता है। जहाँ समरी रिपोर्ट अभी आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही ड्रॉप जोन होता है एंड वी कैन समराइज बेस्ड ऑन द रोज ओनली। मैट्रिक्स में जब जाओगे आप तो आपको पता चलेगा यहाँ दो ड्रॉप जोन्स हैं। ड्रॉप जोन्स क्या होते हैं मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अभी आप मैट्रिक्स रिपोर्ट में आप ये पाओगे कि वी कैन समराइज इट बेस्ड ऑन द रोज एज वेल एज बेस्ड ऑन द कॉलम्स। तो ये दो ही ऐसी रिपोर्ट होती हैं, एक तो समरी रिपोर्ट और दूसरा मैट्रिक्स रिपोर्ट। ये दो ही ऐसी रिपोर्ट होती हैं जिस पर आप डैशबोर्ड या चैट कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट डैशबोर्ड ऑन समरी रिपोर्ट और मैट्रिक्स रिपोर्ट। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि ये बहुत जरूरी समझ। आउट ऑफ ऑल दीज फोर रिपोर्ट्स, out of all these four reports, you can only create chat components या dashboard components on summary report and matrix report. और जॉइंट रिपोर्ट की भी एक खास बात है, जब वो आएगा तब मैं बताऊंगा। वो शेड्यूलिंग के रिलेटेड है जो हमने कल देखा। टैबुलर रिपोर्ट में शेड्यूलिंग कैसे करना ना कल देखा, तो उसकी जब जॉइंट पे आएंगे तो एक खास बात आएगी, वो पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये समझें कि chat components can only be created on summary report as well as on matrix report. Chat component cannot be created on tabular and joint. You cannot create dashboards on tabular report as well as on the joint reports. ठीक है, chat components can only be created in the summary report as well as on the matrix report. चलो तो अब समरी एग्जैक्टली क्या है, कैसे सेटअप करते हैं, तो बेटर कैसा है अपन इसका ना यूज केस लेके सॉल्व। चलो, सो कॉन्फ़िगर अ समरी रिपोर्ट to represent all the account records by grouping them based on the rating field and then represent this in the chat also, chat भी बनाना है। तो रेटिंग फील्ड के हिसाब से समराइज करना है, रेटिंग फील्ड के हिसाब से समराइज करना है। इसका मतलब क्या है? चलो, सो लेट्स गो बैक टू दिस, लेट्स क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट। ठीक है, ऑन विच ऑब्जेक्ट? अकाउंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सी वेन एवर इनिशियली यू लैंड, यू इनिशियली लैंड ऑन व्हाट, आप हमेशा जब भी आते हो तो व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइप ऑफ द रिपोर्ट? टैबुलर। अब मैं टैबुलर से कन्वर्ट करके उसको समरी बनाऊंगा, वो एक अलग बात है।
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सिलेक्ट द कॉलम्स, है ना, मैं कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. So I want to have this account name type rating. Apart from this, I want to have annual revenue. Type is already there. This meeting is going to be ended in 10 minutes, Rahul. I'm getting this message. Meeting is going to be ended in the 10 minutes. You need to form a new meeting. Okay? Chalo. So, yes. I also want to have the industry, ownership, city, country, phone, fax, website, and the active status. That's it. And from here, I need to select all accounts of all time. So if I now run this report, now I can see that, altogether there are 17 records with all these fields over here. Okay. Let me go back and customize. So presently, this type of report is actually what? It's a tabular report. Now let me convert this tabular report to, from tabular, let me convert it to the summary and see what happens. As soon as you change the format, as soon as you change the type of the report from tabular to summary, you see there's a drop zone. This is called as drop zone. A drop zone is created over here. This is called as drop zone. So here is the drop zone where you actually need to drag and drop the field on which field you want to custom, on based on which field you want to summarize the report. So according to my use case, I want to create the groups. I want to summarize, I want to create the grouping based on what? Rating. Based on what? Rating. So we just drag and drop it over here. Drag, drop. This is one of the way. This is one of the way. I want to group them based on the rating. What you can do? You can do just drag and drop. See, when you drag it from here to here, whenever you drag any field, so it is going to be, यहाँ से हट जाएगा. This is one way. I can make it like this. What I have done, मैंने इसको यहाँ से यहाँ ला लिया. ठीक है. एक तरीका तो ये होता है. देखो, एक अब आपने ड्रॉप जोन में एक फील्ड डाल दिया तो एक और आ गया यहाँ पे. दिस इज वन वे, जस्ट टू ड्रैग एंड ड्रॉप द फील्ड लाइक दिस. ठीक है. एक तो ये तरीका होता है ड्रॉप जोन पे फील्ड डालने का, ये तरीका होता है. दूसरा क्या होता है कि एक और तरीका होता है, जब आप फील्ड पे कर्सर लेके जाते हो, तो आप जब यहाँ पे एक पिक लिस्ट ओपन होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है ग्रुप बाय दिस फील्ड. इफ यू क्लिक दिस तो वो भी ड्रॉप जोन पे चला आता है. ये दूसरा तरीका होता है. तो फिलहाल मैं इसको वापस कर देता हूँ. मतलब देखिए, दो तरीका होता है इसको लाने. ड्रॉप जोन पे फील्ड लेके आने के दो तरीके होते हैं. तो रेटिंग फिर से लाना पड़ेगा. राइट. तो जब आप यहाँ से हटाते हैं ना तो एक्चुअली वो हट जाता है. ठीक है. So based on rating, based on rating, actually I want to summarize this. तो ये ड्रॉप जोन पे, एक तो मैंने इसके पहले क्या सीखा आपको, ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना. बेस्ड ऑन रेटिंग वी वांट टू समराइज. दूसरा तरीका ये है कि आप रेटिंग के हिसाब से करना चाहते हो तो यहाँ जाएं और ग्रुप बाय दिस फील्ड करेंगे, तब भी सेम चीज होगी. तो इस तरह से दो तरीके हैं ड्रॉप जोन पे फील्ड को ऐड करने के. ठीक है. एक तो प्लेन ड्रैग एंड ड्रॉप है. दूसरा होता है कि यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है. एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, इस ऑप्शन ग्रुप बाय दिस फील्ड से भी आप उस पर्टिकुलर फील्ड को ड्रॉप जोन के अंदर लेके आ सकते हो. ठीक है. तो अब ये क्या हुआ है एक्चुअली, ये सब क्या हुआ है. तो और यहाँ पर देखिए, आप एक बटन दिख रहा है आपको, ऐड चार्ट. ये इसके पहले टैबुलर रिपोर्ट पे नहीं था जब मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया था. तो मैं सबसे पहले तो इस रिपोर्ट को रन करता हूँ और यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो अभी क्या हुआ है कि ये सारे 17 रिकॉर्ड जो हुआ करते थे, ये बाइफरगेट हो गए, ये ग्रुप बन गए. इनकी ग्रुपिंग्स हो गई है. कैसे? इनकी जो ग्रुपिंग हुई है वो बेस्ड ऑन द रेटिंग हुई. मतलब सारे 17 रिकॉर्ड्स में से वो रिकॉर्ड जिनकी रेटिंग है ब्लैंक, वो सारे एक ग्रुप में आ गए. और ऐसे कितने हैं? ऐसे 6 रिकॉर्ड्स हैं. आउट ऑफ 17, दीज आर द 6 रिकॉर्ड हुज रेटिंग इज ब्लैंक. आफ्टर दैट देयर इज अ ग्रुप. आउट ऑफ दिस 17, दीज आर द 6 रिकॉर्ड हुज रेटिंग इज हॉट. तो ये वो सारे अकाउंट रिकॉर्ड है जिसका रेटिंग क्या है? हॉट. 4 ऐसे अकाउंट रिकॉर्ड है जिसका रेटिंग है वार्म.
और एक ऐसा अकाउंट रिकॉर्ड है जिसका रेटिंग है कोल्ड। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअली समराइजेशन हो गया है। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये ग्रुप्ड हो गई है, इसमें अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन रेटिंग। अब ऐसा कुछ नहीं कि आप एक ही ड्रॉप जोन, आई मीन एक ही फील्ड से समराइज कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे एक और चीज किया था, मैंने मतलब इसके अलावा मैंने एक्टिव स्टेटस को भी समराइज कर दिया था। देखिए, अगर मैं एक्टिव स्टेटस लेके आता हूँ, ठीक है, एक और मैं यहाँ पे क्राइटेरिया इंसर्ट करता हूँ, ग्रुप बाय दिस, ठीक है। अब मैं इस रिपोर्ट को रन करता हूँ, आप देखिए अब यहाँ पे ना दो क्राइटेरियाज हैं, दो तरह के ग्रुप है। सबसे पहले ये 17 रिकॉर्ड्स में से वो रिकॉर्ड्स जिनकी रेटिंग क्या है, पहली चीज रेटिंग है ब्लैंक, रेटिंग है ब्लैंक और एक्टिव स्टेटस है ब्लैंक, ऐसे हैं दो रिकॉर्ड। रेटिंग है ब्लैंक और एक्टिव स्टेटस है यस, ऐसे हैं चार रिकॉर्ड। रेटिंग है हॉट, एक्टिव स्टेटस है यस, ऐसे हैं छह रिकॉर्ड। रेटिंग है वार्म, एक्टिव स्टेटस है ब्लैंक, ऐसा है एक रिकॉर्ड। रेटिंग है वार्म, एक्टिव स्टेटस है यस, ऐसे हैं तीन रिकॉर्ड। तो आप सब ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप के अंदर और जितना चाहे उतना डीप में स्पेशलाइजेशन लगा सकते हो, या ना जितना भी आपको यहाँ पे अंदर जाना चाहिए उतना आप कर सकते हो, राइट। तो एक ग्रुप के अंदर और सब ग्रुप भी क्रिएट किए जा सकते हैं। फिलहाल ये हटा देता हूँ बिकॉज मुझे इसकी जरूरत नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू ग्रुप इट बेस्ड ऑन द रेटिंग कॉलम, ठीक है। तो रेटिंग के हिसाब से मैंने ग्रुप कर दिया। दिस इज माई यूज केस, सेव इट। So this is what summary report use case number 1, ठीक है। I'm going to store it into the align HR folder. Let me save this. So this is what summary report। चलिए अब summary report में एक दो चीजें और बतानी है मुझको आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएटेड अ रिपोर्ट, रिपोर्ट तो मेरी बन गई है ना, जैसी मैं चाहता था वैसी बनी। अब हमें बोला गया है कि इसके साथ में चैट कंपोनेंट्स भी ऐड करना है। तो अब चैट कंपोनेंट्स केवल दो ही रिपोर्ट्स में ऐड हो सकते हैं। चैट कंपोनेंट्स कैन बी एडेड ईदर ऑन समरी रिपोर्ट एंड मैट्रिक्स रिपोर्ट, ठीक है। समरी रिपोर्ट और मैट्रिक्स रिपोर्ट पे ही चैट कंपोनेंट ऐड होते हैं। सो ऐड चार्ट, देखिए अब ये हैं आपके चार्ट कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट, लाइन चार्ट, उसके बाद पाई चार्ट, डोनट चार्ट, दिस इज डोनट, दिस इज फैनल, फैनल चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट। इसमें से आप जो भी चाहे ले सकते हैं। सो लेट मी टेक दिस फैनल चार्ट, ओके, और rather the donut chart, चलिए donut chart ले। So with this column I can make some formatting, I can give the chat customer with the rating like this, and any name you can give them, customers with the rating, then show the values, enable the hoover, show the total also, ठीक है। Chat position above the report, below the report, size is what, medium, small, whatever you want, like I'm selecting it to be the small, and you can even change the colors also, ठीक है। आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, या जो कलर्स डिस्प्ले हो रहे हैं ना आप चेंज कर सकते हैं। लेट मी प्रेस दिस ओके, एंड सो सी हाउ डस रिपोर्ट्स लुक लाइक। लेट मी नाउ रन द रिपोर्ट। तो अब देखिए आपकी रिपोर्ट कैसी दिख रही है। दिस रिपोर्ट कम्स अप विद द चैट कंपोनेंट, ठीक है। एंड व्हेन ये हूवर कंसेप्ट है, जो मैंने वहाँ पे हूवर किया ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है हमको। व्हेन आई ब्रिंग माय कर्सर ओवर ऑन दिस ग्रीन, इट्स शोइंग मी दैट out of 17, out of 17 there are 6 record whose rating is hot. And what is the percentage? 35%. If I bring it over here to warm, cold, and the sixth. So this is what, this is the chat component. Now this chat component can only be added on what? The chat component can only be added on summary report and the joint report. Sorry, summary report and the matrix report. और चैट कहाँ पर नहीं आता है? जॉइंट और टैबुलर, ठीक है। इसके अलावा क्या मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ? यस, आई कैन शेड्यूल दिस, ठीक है। तो टैबुलर रिपोर्ट भी शेड्यूल होती है, समरी रिपोर्ट भी स्केड्यूल होती है, ठीक है। अभी इसके आगे हम जॉइंट रिपोर्ट पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जॉइंट रिपोर्ट स्केड्यूल नहीं हो, तो केवल वही एक रिपोर्ट है जो स्केड्यूल्ड नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, ये होता है चैट कंपोनेंट। दिस इज हाउ वी एक्चुअली ऐड द चैट कंपोनेंट।
इसी को डैशबोर्ड कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो अभी डैशबोर्ड पे भी लेके जाऊंगा मैं इसके आगे आपको। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज चैट कंपोनेंट। Okay, so this was summary report. Now, let me show you one another concept. This is actually a concept of bucket fuel. This is